તો આગળ વાત સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં જિલ્લાના ગ્રામ વિકાસ એજન્સી એટલે કે ડીઆરડીએમાં આઉટસોર્સ ટેન્ડર સાથે જોડાયેલી ગંભીર ગેરરીતિનો મામલો સામે આવ્યો છે। ટેન્ડરની મુદત લંબાવવા માટે ₹27 લાખથી વધુની બનાવટી બેંક ગેરંટી રજૂ કરી ઠગાઈ કરવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે। આ મામલે હિંમતનગર બી ડિવિઝન પોલીસ મથકે 2 આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાતા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે। ओके बोलो ने जिला ग्राम विकास एजेंसी साबरकांठा तथा ताबानी कचेरी माटे आउटसोर्स थी मानवबना बर माटे अत्रेथी उमा एंटरप्राइज ने तारीख 17/2/26 थी तारीख 16/2/27 सुधी वर्क ऑर्डर आपवामां आवेल हतो। जे अन्वये नियमोनुसारनी तेमने सिक्योरिटी डिपोजिट जमा करवा माटे अत्रेथी जणावेल हतुं। उमा एंटरप्राइज द्वारा यस बेंकनी सिक्योरिटी डिपोजिट अत्रे जमा करावेली हती। नियमोनुसार ते सिक्योरिटी डिपोजिट ने अमे खराई करवा माटे यस बैंक गांधीनगर ने मोकलता गांधीनगरे यस बैंक गांधीनगर एवं जणावेल के सदर सिक्योरिटी डिपोजिट ते बैंक द्वारा इश्यू थयेल नथी तथा तेनी जे गेरंटी नंबर है ये पण इनवेलिड है। त्यारबाद माननीय चेरमेन साहेबश्रीना आदेश अनुसार ते उमा एंटरप्राइज ने पत्रेथी ब्लेकलिस्ट करवामां आवी छे तथा नियमोनुसारनी छेतरपिंडी अंगेनी फरियाद साबरकांठा हिम्मतनगर खाते बी डिविजन खाते नोंधाववामां आवी छे। छेतरपिंडी 27,23,636 रुपयानी हती। आउटसोर्स एजेंसी तरीके विविध कचेरीओमां काम करे छे, मानवबळ पूरुं पाडे छे। महेश कुमार सोमाभाई पटेल। तो આગળ વાત સાબરકાંઠાની વાત કરવામાં